long as it gets charged by the solar panels, okay, it will work. Okay, so to understand it better, the Pragyan, the rover, will work for 14 days from our perspective, and the Vikram will work till the time it is able to go ahead and charge its solar panels. And for the orbiter? Orbiter, no problem. In the sense, it's much larger because it's continuously rotating. We have got like any conventional satellite. We have got like any conventional satellite. It will have one conventional satellite. It will have one satellite. It will have one So sometimes most of the satellites will work more than the design. So we'll design the satellite such that not only the solar panels, the equipment inside, because we deal with a lot of harsh environment. Okay. So with considering all this, we'll have designed the entire satellite for working at least 1 year. The orbiter is expected to work, it may work more. Okay. Mr. Pramod, that's quite a lot of time, and quite a lot of data which we'll get. Yes. And the processing of data may take longer. Okay, the getting data for 1 year means it's going to keep scientists busy for much longer, maybe for few years, and a lot of exciting information may emerge from that. Okay, and that is the information which we can use for our further missions, and specifically the manned mission which we've been preparing for quite some time now. One important aspect, and I'll ask all three of you specifically, let me begin with Dr. Raju first, is why the south side of the moon? Why is it so important? Because this is the most significant aspect of this mission, the south side of the moon. It's an uncharted territory, unexplored one that we understand. But what are the reasons? One of the reasons is that it is expected to have a lot of ice, number one. Totally uncharted is one thing. The unraveled mystery is there, and they hope that future landing sites like Apollo spacecraft could land on that. We are finding out a place for landing of the future manned missions. So that is the one which is very, very important. And we also hope to have the other thing is ice and water, and we can have our own station there. Okay. Likely to have in future, if you think ahead, we can have a station. It can be any kind of station, like you can have a station to manufacture. If you think of 40 years or 50 years from now, you can have minerals, as we were talking. That mineral can be slightly processed. It can have a good laboratory. That is the one expectation. So you can have a full-fledged station, like we have an Antarctic station. Antarctic station is collecting samples and doing many kinds of research. So we can have a moon station, a station which will do many scientific work. And secondly, I hope that they can also launch from there, because the the gravity of moon is much less than the gravity of the Earth. So using moon as a launch pad, probably, yes. It will make it easier for us to maybe explore other celestial bodies. Higher. And it might take less time to reach other celestial objects. For example, the amount of time which our Mars orbiter is taking now, it might take a little less if it is done from surface of moon. Yes, and also it can take less power to go higher. And that makes it very much significant. Okay, both in terms of cost as well as in terms of time and the scientific experiments. Because it can then carry more payloads to have more equipments on that. Ravindra? Yes, I agree with all these things, including that there is one more thing. This South Pole is not explored, as well as it's not much affected by external forces. So it's not much changes are happened. You can collect the sample and go back to what is the age, what exactly the age of the moon, or what are the other contents? Is it different from the Earth or some other planet? That can be explored there. Okay. Yes. Mr. Pramod. Yeah, as they pointed out, certainly those advantages are there. And another thing is, it is expected that there is more water there. Okay, for future missions and all, that information is going to be very, very important. So going to South Pole it makes a lot of sense to go to South Pole, and
let's all hope that something good will emerge from there. Okay, clear. Definitely, there. All of us are hoping, and we are watching it keenly, and not us only, but the entire nation, the entire world is watching with bated breath, and to see as to how exactly will this happen, and this will be one of the biggest marvelous achievements for ISRO, for India, for the scientific community, to try and find out more about the lunar surface, about our moon, the celestial objects out there, and what exactly lies on the surface of the moon. It's almost 1 a.m. and in a short while there will be, activities which will gain momentum, and then the time will come for the soft landing. We'll come back in a short while. Let's go to Delhi studios right now. शुक्रिया विशाल। एक बहुत ही गाढ़ी चर्चा स्मृति हमने सुनी, और ख़ास तौर पर जो ऑर्बिटर लैंडर रोवर की जो पूरी बनावट है, किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से चंद्रमा से तथ्य लेकर आएंगे, और डिस्कवरी के लिहाज से कई रहस्य के से पर्दा उठेगा, उसके बारे में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से समझाया। क्योंकि चांद को लेकर स्मृति एक अलग ही कौतूहल है दुनिया में, और भारत में ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारी संस्कृति से ही चांद किस तरह से जुड़ा हुआ है बचपन से ही बड़े होने तक विज्ञान में, और उसके बाद अब जब ये मिशन हो रहा है तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल सभी के जहन में हैं। Absolutely, Abhilasha. In just a few moments from now, the entire world will witness the historic event that 1.3 billion Indians have been preparing for nearly in the last 3 months. Rajya Sabha Television is getting you all the minutes and details on that very important Chandrayaan-2 mission that will place India as the 4th country after Russia, US and China to explore the southern pole of the lunar surface. Remember, India's moon mission Chandrayaan-2 is just one step away from setting foot on the moon. और बिल्कुल आपको बता दें कि करीबन 10 साल से इस मिशन पर तैयारी हो रही थी, और जैसा कि इसरो अपनी एक्यूरेसी रेट के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इस मिशन में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो वैसी ही बनी रहेगी। बहुत ही सटीक ढंग से हम इस मिशन में सफल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि इस अभियान से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में अब तक के जो अछूते भाग के बारे में जानकारी दुनिया के पास नहीं थी, वो भारत लेकर आएगा, क्योंकि ये जो साउथ पोल है यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। हालांकि सॉफ्ट लैंडिंग इससे पहले चाइना, यूएसए ने की है, रशिया ने भी, लेकिन भारत इस तरह से दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश हो जाएगा। और सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो अपने आप में एक बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट होता है, क्योंकि इसके साथ बहुत ही तकनीकी जटिलता होती है। और आज 2:30 बजे तक हमें कई ये कह सकते हैं कि चंद्रयान-2 के जरिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल जाएंगे, सिग्नल्स मिल जाएंगे, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारा मिशन जो है वो सफल हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के सतह पर होगी। सबसे पहले जो चंद्रयान-2 है वो अपने लिए सतह को तलाशेगा, एक बेहतर सतह को तलाशेगा जहां पे बहुत सफलतापूर्वक, यानी जहां पे किसी भी लिहाज से उसे कोई नुकसान ना हो उतरे, क्योंकि आपको बता दें इसमें 14 पेलोड्स लगे हुए हैं। यानी जैसा कि विशाल भी चर्चा कर रहे थे सभी साइंटिस्ट के साथ कि इन पेलोड्स के रोल बहुत ज्यादा हैं। तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं वहाँ की तस्वीरें लेने के लिए, वहाँ के वायुमंडल के बारे में जानकारी लेने के लिए, कैसे मिनरल्स है वहाँ पे, अगर वहाँ पत्थर हैं तो किस गुण के हैं, उसके अलावा स्मृति जो वहाँ चट्टानें हैं उसके बारे में। और जो सबसे बड़ी उत्सुकता है पूरी दुनिया में पानी को लेकर, कहते हैं चंद्रमा में आइस वाटर चंद्रयान ने ही डिटेक्ट किया था, और ये वो इलाका है साउथ। But now the question is that how much water? Scientists have been emphasizing on the fact that water is there, but how much water is there and where, in which zones the water is present? और ये जो जानकारी है कि कितना पानी होगा, ये पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें मदद करेगा आगे आने वाले for more research and scientific innovation and technological advancements for countries across the world. At the moment, we are joined by our correspondent Aruna Thakur from ISRO Monitoring Center. Aruna, I hope that Mr. TV Venkateshwaran is still with you. What are the latest
updates you are getting from the monitoring center? See, Smriti, right now the information is coming that, already we got the information that Prime Minister Modi is already there. And the students are also there who are chosen, about 70 students are there in the mock center. So, right now the excitement is still there. He will come and we'll got the news and he will meet the students who are very much excited to meet him. And about the excitement, Smriti, I want to know, I will ask from TV sir, like sir, in the just 15 minutes of terror, you was telling me that reducing that speed, velocity, it's very tough. Why it is tough? It's not very tough, but you have to use a different method in Moon. If you are going to land on Mars, Mars has an atmosphere, so you can put a parachute. Or even if you are going to land on Earth, if some astronauts go to space, for example, International Space Station, when they return back, you have to also reduce their speed. Okay, so on Earth also it's a challenge, but then you can put a lot of parachute. So that will take you down safely. If you want to land on Venus, it's also not a big difficulty because it has atmosphere. Moon has no appreciable atmosphere. So parachutes are out of question. Okay, so what do? What you do is that you use the same rocket using which you are going up, use the same rocket to make the spacecraft float, slow down. How do you do it? It's very simple. Let me say that I have a water pipe. I'm watering garden. I have a pipe. The moment you open the tap and the water gushes out, I will feel a push backwards, right? So if I keep the pipe like this, I'll feel a push this way. If I keep it like this, I'll feel a push this way. Similarly, if I keep it downwards, I'll feel a push upwards. So basically, that's what you are doing when a rocket is coming down. Suppose if this is the spacecraft which has to land on the moon will be pulling it with its gravity. So what you do is that you fire the retro rockets. Rockets fire in the direction of the motion is called retro rockets. You fire it in this direction. So that will give an impulse in this direction, or force in this direction. These two will counter, and if you actually match it, you can even make it float. In fact, when the Vikram lander is going to be on top of moon at around 400 meters, it will be hovering. It means it will be just floating for 25 seconds because it has to find the right place to land. Okay? So then you reduce the downward rocket, then it will slowly come down. It will slowly come down and then land on the surface of the moon like a feather. So that's how the soft landing has to be done on moon. And all these things, for example, this 400 meters to ground is going to happen less than 1.5 seconds, 1.5 seconds. And none of this can be controlled from Earth. Okay? So it's a very, very complex, challenging action where you have pre-programmed, you are pre-trained your lander. In fact, it's not only programmed because it's not only one. When there is option A, it has to do like this. When there is option A, it has B, it has to do like this. There are multiple options which you have to code. And the Vikram lander has to decide at that time which option is the best. So you have also put artificial intelligence like this in this mission for landing. It's a very, very challenging technology which ISRO is deploying this time to land on the moon. सर एक और सवाल मैं आपसे हिंदी में पूछना चाहूंगी बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें भी है कि कुछ टर्म लोग बहुत गलत यूज कर रहे हैं लाइक साउथ पोलर रीजन तो हम कर रहे हैं बट कोई साउथ पोल बोल रहा है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउथ पोल एंड साउथ पोलर रीजन बिकॉज वी आर लैंडिंग ऑन साउथ पोलर रीजन सो हमारा लैंडिंग पॉइंट है ना वो मून का 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ओके सो साउथ पोल होना है तो 90 डिग्री होना है और 90 डिग्री के आसपास होना है 88 हो सकता है 89 हो सकता है इवन 86 भी हो सकता है बट 70 साउथ पोल नहीं होगा तो ये साउथ पोल नहीं है साउथ पोलर रीजन है अभी धरती में भी देखा तो आपको अंटार्कटिका है विच इज इन साउथ पोल ऑफ अर्थ तो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट का एज में आप जाने के समय आप बोलेगा मैं अंटार्कटिका जा गया बट इसका मतलब नहीं है आप साउथ पोल जा गया उसी तरह हम साउथ पोल रीजन को जा रहा हूँ एग्जैक्टली साउथ पोल को नहीं जा रहा हूँ एग्जैक्टली साउथ पोल जाने का बहुत आवश्यक भी नहीं है अभी हमको साउथ पोल रीजन की जाना है इस रीजन हम चूज किया है बिकॉज इस रीजन में बहुत खनिज है वो खनिज रिसर्च करना है
वाटर का पॉसिबिलिटी है, पानी उधर बर्फ की रूप में होने का संभावना है, तो इसलिए इस जहां हम चूज किया है उधर जाने के लिए। अभिलाषा स्मृति, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। और अरुणा, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो वहाँ क्रेटर्स हैं, जिन क्रेटर्स के बीच में साउथ पोलर रीजन में जो जगह चुनी गई है, उसका भी बेहद महत्व है। हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जो वहाँ छात्र पहुंचे हुए हैं, देश भर से चुने हुए ये छात्र हैं, जो जिन्हें आज मौका मिलेगा वहाँ चंद्रयान-2 के लैंडिंग को देखने का। नई ऊर्जा के साथ, नए सपनों के साथ, and also serve humanity as a whole. मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता These young students और have participated in the space quiz नए उत्साह के साथ and they are here to witness the historic event. At ISRO, as the boundaries of India's capabilities in space continue to expand, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, encourages exploration of space potential and also application of space technologies to help ease of living. Prime Minister, in his Mann Ki Baat address, had invited students to participate in space quiz. His appeal had got an overwhelming response, and today, apart from the scientists and other stakeholders, we have students not only of India, but also of Bhutan, to witness the soft landing of Chandrayaan-2 on the south polar region of the moon. So what makes Chandrayaan-2 special? This is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all kinds of complex data. India is at the brink of creating history. Are you ready to witness history tonight? A very good morning and welcome from the Mission Operation Complex of Telemetry Tracking and Command Network, an unit of Indian Space Research Organization, ISRO, located in Bangalore in the southern part of India. My name is Radhakrishnan and I have with me my colleague Dr. Alok, who will be bringing to you the live coverage of the Chandrayaan-2 mission in English and Hindi. Today, we are all awaiting anxiously to witness the final phase of critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-2, wherein Indian lunar lander named Vikram will be making the soft landing on the surface of the moon. We are approximately 28 minutes away from this important event. For the viewers, just a quick update on the Chandrayaan-2 mission. Chandrayaan-2 spacecraft is a composite unit consisting of 3 independent modules, named an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan, which is housed inside the lander unit. At the time of launch, all these 3 modules are held together as a single spacecraft called Chandrayaan-2, and the total mass of Chandrayaan-2 at launch was 3,850 kilograms. As you are all aware, launch of Chandrayaan-2 spacecraft took place on 22nd of July on board India's heaviest GSLV Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. The launcher has successfully placed Chandrayaan-2 into an elliptical transfer orbit around the Earth. Subsequently, Chandrayaan-2 composite module raised its orbit around the Earth by using its rocket propulsion system in preparation to move from the earthbound phase to the lunar transfer phase. Now, if you look at the overall sequence that has happened since the Chandrayaan-2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan-2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon, and later it performed almost 4 lunar-bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware
On 2nd of September, which was 5 days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. And the very next day, after the orbiter and lander module got separated, next day, the lander Vikram module performed 2 deboost operations just to move the orbit from an orbit of 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are almost 26 minutes away from the launch, and the orbiter module is rotating at an orbit of around 100 kilometers around the moon, and we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch of Chandrayaan-2 on 22nd July, today is the 40th day when landing is expected to take place. So right now we are around 26 minutes away from the start of the most important and crucial powered descent operations. And once this powered descent maneuver is initiated, it's expected to take roughly around 15 minutes for the lander Vikram to make a soft landing on the surface of the moon. नमस्ते, सुप्रभात और आने वाला दिन शुभ हो। इसी संदेश के साथ मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी श्री राधाकृष्ण जी के साथ आप सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस समय इसरो के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक के मिशन कॉम्प्लेक्स से इस बहुचर्चित क्षण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं। उपलब्धियों के भारतीय आकाश का एक और देदीप्यमान सितारा चंद्रयान-2 के रूप में परिणति के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसमें चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम और उसके अंदर संयोजित रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2 क्रैटरों मैग्नीज सी और सिम्पेलिस एन के बीच मुख्य संभावित अवतरण क्षेत्र SLS-54 TLS-1 जो 70.90267 साउथ अक्षांश या लैटिट्यूड और 22.7811 ईस्ट पूर्व देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतरकर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग 84 मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित निर्देशांकों 70.89992 साउथ अक्षांश और 22.7811 पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है। किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर यह संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है, जो ALS-0 ALS-1 जो 67.74915 साउथ अक्षांश और 18.46947 वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का चयन कर लिया गया है। आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान-2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान-2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई। तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कसौटियों पर खरा उतरा है। तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो। गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज चंद्रयान-2 के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है। इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक
आंकड़ों पर गहन नजर बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। काम करना है। The countdown is at minus 22 minutes, 2 seconds to go. After 22 minutes, you will be witnessing the descent, power descent of the Vikram lander module. As I just mentioned, the Vikram lander module is presently orbiting in an orbit of 30 kilometers perilune, which is the lowest altitude from the surface of the moon, and the apolune, which is the highest point of the orbit from the surface of moon, is around 100 kilometers. And once the descent operation starts, we expect to take roughly around 15 minutes. And some of the important events during the descent phase, which we'll be covering in the subsequent point as we go closer to this particular activity. But before we do that, just to get a update on the orbiter module, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers. As you are all aware, the total mass of orbiter module is 2,369 kilograms. At launch, we had the composite module of orbiter and the Vikram lander, which was 3,850. So the orbital module, now that it has got separated from the Vikram lander, has a mass of almost 2,370 kilograms. And out of this total mass, the orbiter, the fuel the orbiter carried was almost 1,683 kilograms. So eventually, if you look at the capability of the orbiter, almost 70% of its mass is the fuel. And the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is basically to raise the orbit from the Earth to the moon and then lower it down very close to the moon. As I already mentioned, when the spacecraft was injected in an orbit of around 39,000 kilometers around the Earth, eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter was raised to 400,000 plus kilometers to get captured in the sphere of influence of the moon. So the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers, and in the process, if you look at it, it's almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high-resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and has, as I mentioned, several scientific measurements. So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown. And we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the power descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction, which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान-2 एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान-1 ने खोज ही लिए थे, और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है।
चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं वहां पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है। आप अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं विशेष। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है। एस्ट्रोसैट था, मंगल कक्षक मिशन था, चंद्रयान-1 था और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहाँ पे इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे। चंद्रयान मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। विक्रम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रज्ञान रोवर ये 6 पहियों वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया। ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह को उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के निदेशक उनका स्वागत करते हुए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने, डॉक्टर कुन्नी कृष्ण जी जो युवा के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर VV श्रीनिवासन जी जो इस ट्रैक के निदेशक हैं, वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए बहुत महत्वपूर्ण होता है वो देश वो क्षण जहाँ पे उसके रहनुमा उसके साथ खड़े होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है जब हमारे माननीय प्रधान जी हमारे साथ and telemetry command network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event. He will be when Vikram lander will be on the surface of the moon.